Namaskar students of MSc and ND first sem. I Sakshi Pandey, Faculty of Agriculture and Veterinary Science, and today's session topic of your course nutrition is about the nutrition in special condition. So in this session we will talk about like the space and when we are traveling. So what kind of nutrition you will require while you're traveling. So this is like a journal topic like if you're traveling somewhere अगर आप कहीं travel कर रहे हैं आप if you're in flight और you are तो आपको कैसे मतलब अपना nutrition का content कैसे आपको अपना एडजस्ट करना होता है ठीक है तो फर्स्ट थिंग लाइक ड्रिंकिंग वाटर अगर आप ज़्यादा वाटर लेते हैं अपनी थ्रू आउट योर ट्रैवलिंग तो इट मे लीड्स टू मैनी ऑब्स्टिकल बिकॉज वाइल ट्रैवलिंग यू कैंट लाइक seeing washroom and it is quite difficult to check or like to be in the washroom places. Okay, so in that situation you should avoid drinking water too much because it can brings to many obstacles. इट कैन एनहांस लाइक जैसे आप फ्लाइट में है तो इट कैन लीड देयर आर मेनी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम पीपल समहाउ लाइक थ्रू स्ट्रेस और यू मे से लाइक थ्रू टेंशन they can't control their bladder or maybe they can't like to go washroom more and more times. Okay, so it's like जब traveling के टाइम पे flights के टाइम पे while ट्रेन्स या फिर जब भी आपकी कोई ट्रांसपोर्ट होता है लाइक विच यू हैव टू बी कैच तो उस टाइम पे एक अलग सा आपके ब्रेन में एक स्ट्रेस एक ट्रॉमा रिलीज होता है जिसकी वजह से आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है तो like if you're prone to upset stomach or indigestion while flying so it's great to be consumed ginger or ginger tea or you may say like the tea which is helps for your to calm your or reduce your stress level. Other than this, if we say like in traveling, what kind of nutrition you require? So the first is can be the low calories snack. Low calories snack. Why is that so? Because while traveling, you can't invest your energy much. Okay, so you should require or you should like have to be a low calorie food. Low calorie food क्योंकि आप ज़्यादा उसमें आपका कोई इतना workload नहीं होता है and you people like go and sit to one seat for the longer time so like low calories food is basically required at that time and like for calories or with a protein requirement you can go for the mini protein bars ठीक है protein bars they are easy to be travel with protein bars से easy भी रहता है आपका and it doesn't consume much of your spaces और small size होते हैं and it can also helps to make your appetite much much more condition then the fresh fruits of option like apples banana and you may can take them with your traveling and it can also like to change your mood and sometimes also bring your appetite in good condition. Other than this, dry fruits is also one of the good option while traveling somewhere. Dry fruits like जैसे आप walnuts हो गए या pistas हो गए, almonds हो गए, तो उससे आपका जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं स्ट्रेस हार्मोन जो होते हैं आपके रिलीज होते हैं ड्यूरिंग ट्रैवलिंग तो वो कंट्रोल रहते हैं हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी कंट्रोल रहती है तो एंड ऑल्सो ड्राई फ्रूट इज ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोवाइड फाइबर फॉर द डाइजेशन. Other than this, you can go for the supplements, e-boost supplements like the energy drink or national energy drink or you may say or Nestea or detox water. Okay, so this also helps for to calm your body and to make your traveling much more easier. So this is all with the session of your nutrition during the traveling. I hope you're well satisfied with this video. In case of any doubt, you may ask in the comment section. Thank you.